further Pathshala. This is my YouTube channel SK Classes for Physics, and this is my phone number. If you have any doubt, any query regarding physics, you can call me, and you can see my channels. There are few lectures I have given to you. Now today we are going to discuss dual nature of matter and radiations. That we are going to discuss top two classes हमने इसके attend कर लिया. आज हम third class attend कर रहे हैं. Photoelectric effect and wave theory of light. Failure of wave theory of light we have explained. That the previous topic. Now we have Einstein Photoelectric Question, energy quantum of radiation, particle nature of light, the photon. First of all we will do the Einstein's Photoelectric Question क्या है. Einstein Photoelectric Question क्या है. Einstein ने Photoelectric Question दी. क्या है Photoelectric Question? देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेटल का पीस है. This is a metal piece. I have explained you already. What will happen? यहाँ से photon आया, यहाँ से photon. You know, light consists in packets. Light have that is the wave nature as well as particle nature. तो light के अंदर क्या particle होता है? Photon होता है. क्या होता है? Photon. As you know, on means particle. As the electron, on, proton, on is there. Here is again photon, neutron, on is there. Here is a photon. Means these are the quantum of energy that is consist inside the light. Means what we can say, light exists in packets rather than in continuous amount. लाइट कंटिन्यूस अमाउंट में एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो पैकेट्स में एग्जिस्ट करेगी. लाइट के अंदर एक फोटोन आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा है. इस तरह से जो फोटोन होता है उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होती है. मींस एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. सी E इज इक्वल टू h इनटू न्यू. h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. व्हाट इज h कॉल्ड? प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट इज कॉल्ड. H की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 into 10 power minus 34 into joule second. That's the constant value. That's the constant, fundamental constant. H is the Planck's constant. H nu means E is directly proportional to nu. The light whose frequency is more, whose photon is more energetic. We will compare the. कई बार क्वेश्चन आता है कि red light photon is more energetic than violet light photon. Is this statement true? No, because रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होता है और वायलेट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा. ओके, तो व्हाट वी कैन से, ए वायलेट लाइट फोटोन इज मोर एनर्जेटिक देन द रेड लाइट फोटोन. व्हाई? बिकॉज एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, मोर इज द एनर्जेटिक दैट इज द फोटोन. Photon is more energetic. We will talk about gamma rays photon that is more energetic than that of the microwaves photon. Why? Because the frequency of the gamma rays is greater than that of the frequency of the which one? Microwaves. That's why we can say the photon, we have Vibgyor. See, we have Vibgyor. Means what we can say? Violet light photon. See, indigo blue color photon have more energy than that of orange color photon. Yes? ऑरेंज लाइट का जो फोटोन है उसके पास कम एनर्जी होगी और जो ब्लू कलर के फोटोन है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी. E is equal to h into nu. This is the case suppose. What will happen? The photon will comes here. It has energy is equal to E is equal to h nu. It will fall on the metal surface. When it will fall on the metal surface, electron will come outside from the metal surface. If the electron will come outside the metal surface, this E can be, this energy can be utilized in two ways. First way क्या है? It is used to overcome the surface barrier. Means energy is using energy is utilized. It is used to overcome the surface barriers. Means energy, whatever the energy that is utilized to, energy is utilized to work function of the metal. Whatever the energy remains, that will provide kinetic energy to the electron. Means आपकी एनर्जी कितने तरीकों में डिवाइड होगी? दो तरीकों में. काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत अच्छा शूट करेगा. वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रॉन मींस आपके पास जो फोटोन के पास एनर्जी है, एक तो वो वर्क फंक्शन के बराबर चाहिए हमें, दूसरी जो बच जाएगी वो क्या प्रोवाइड कर देगी? काइनेटिक एनर्जी. मान लीजिए फोटोन के पास एनर्जी इतनी है, वो वर्क फंक्शन के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन बिकम इक्वल टू 0. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू 0. सी मींस
एच न्यू दैट यूटिलाइज इन टू वेज। एक तो क्या करने के लिए, वर्क फंक्शन को क्या करने के लिए, वर्क फंक्शन आएगा, मींस ये यहां से जस्ट आउट वर्क फंक्शन का तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को यहां बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं। एज यू नो सीजियम का वर्क फंक्शन कम है, प्लैटिनम का ज्यादा है, निकल का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहां से एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहां से एनर्जी जो वर्क फंक्शन के बराबर लगेगी, और जो एनर्जी बच जाएगी, अब इलेक्ट्रॉन यहां से मान लीजिए बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन हैव सम काइनेटिक एनर्जी, so it has some kind of energy that is half mv square. See this equation. See h nu whatever the energy, as you know the photon have energy is equal to h nu, that is the Planck's quantum radiations. Planck's ने दिया हुआ है ये energy of the photon is given by h nu. h nu will be utilized in two ways. एक तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन will move with some kinetic energy, so it has h nu is equal to 5 naught plus half mv square. Okay, if suppose we can say if nu is equal to nu naught, suppose करें, means frequency is equal to the threshold frequency, then when it is equal to the threshold frequency, then kinetic energy is equal to 0, half mv square is equal to 0. Why? Because only the energy is utilized to just leave out the electron from the metal surface, तो kinetic energy 0 हो जाएगी, क्योंकि nu किसके बराबर है, nu naught के बराबर है। तो what will you got? इस इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो फाई नॉट किसके बराबर आ जाएगा, h into nu naught के बराबर। दिस एक्सप्रेशन फॉर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है रिलेटेड टू वर्क फंक्शन, यू कैन फाइंड इट। अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी निकाल सकते हैं। You can do this using for numerical. H you constant, h is the Planck's constant, it is constant. Nu naught is equal to phi naught. This is expression. If you substitute this value here in question number first, what this question give us? ये हमारी क्वेश्चन क्या है? What we got? We will see this. हमारे पास क्या आएगा? H nu is equal to H nu naught plus half mv square. What is half mv square equal to? That is H nu minus H nu naught. You can say half mv square is equal to H into nu minus nu naught. This is the question. Now what we can say? What this equation called? This is called the photoelectric equation. What is called? This is the photoelectric equation. ये कई बार आपको एग्जाम में आएगी, प्रूफ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर photoelectric equation. Half mv square is h into nu minus nu naught. We can write it is in another form. See, half mv square is equal to h into nu c by lambda, h into c by lambda minus c by lambda naught. Is it? Why? Because nu is equal to किसके बराबर होता है? Nu is equal to c by lambda के बराबर होता है। तो nu naught किसके बराबर हो जाएगा? c by lambda naught. Is the threshold wavelength. Lambda naught is the threshold wavelength. Is the threshold frequency. अगर आपको threshold wavelength भी निकालने के लिए आएगी तो आप निकाल सकते हैं। So this is the expression for photoelectric equation. This is the photoelectric equations. Okay. So this is photoelectric effect and wave theory of light we have explained previously. Now Einstein photoelectric equation हमने क्या कर दी है? प्रूव कर दी है। अगर आपका drive an expression for photoelectric equation, you can drive this expression. You have to remember this. केवल आता right photoelectric equation, simple one number में आएगा. You can write this equation half mv square is equal to h into nu minus nu naught. Okay, this is a photoelectric equation. Now verifications of the laws of photoelectric emissions. केवल क्वेश्चन आता है कि verifications of the laws of state the laws of photoelectric emission on the basis of photoelectric equation. अगर आपको आएगा state laws of photoelectric emission, then you can do the previous whatever the previous article we have done. लेकिन अगर आपको आता है state the laws of photoelectric equation on the basis of photoelectric equation, तो आपने या verifications of the laws of photoelectric verification of the laws of photoelectric emission. जब photoelectric emission की बात आएगी तो वेरिफिकेशन अगर हमने करनी है तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखनी है half mv square is equal to h into nu minus nu naught. नंबर फर्स्ट लॉ ये होगा if nu is greater than nu naught, suppose if nu is less than nu naught, then we can say if nu is less than nu naught, then what is half mv square equal to? Half mv square is equal to negative. Why? See that is nu is less than nu naught. Nu naught बड़ा तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. Kinetic energy is never be negative.
काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू नॉट, देन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। बात समझ आई कि नहीं आई? देखिए, verification of the law of photoelectric equation on the emission on the basis of photoelectric equation. You have to write first this equation, and you have to first law you have to explain here. If nu is less than nu naught, then half m square is negative. From here this equation will come nu naught is less than nu naught. See, we can say nu naught बड़ा हो जाएगा, nu naught is greater than that of nu. What will happen? It is a negative. Kinetic energy is never be negative. Then it means nu is always greater than nu naught. Nu is always greater than nu naught. न्यू नॉट से बड़ा होगा मींस आपका फर्स्ट लॉ क्या था? ये था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट शेड दैट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट लॉ प्रूव हुआ। सेकंड लॉ क्या था कि when the photon falls on the electron means the number of electrons emitted from the metal surface that depends upon the intensity, means the number of photoelectrons emitted is directly proportional to intensity of the incident light. जितने अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड आपने लिखना है प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट means the number of photoelectrons emitted is directly proportional to intensity of the incident light provided nu is greater than, means I am giving you 100 watt bulb, give us 100 electrons, not I am saying this is the true, it may be more 100 40 वाट की 40, जितने इलेक्ट्रॉन्स जितने क्या बोलते हैं फोटोन्स निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? एनर्जी डिपेंड करेगी। मींस नंबर थर्ड फैक्टर यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखेंगे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सी मोर इज द फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज acquired by the electrons. See the case, see this from this question, this is put. Number fourth, जो photoelectric effect है उसमें as you know that's the bullet nature, as the photon falls on the metal surface the electron will eject out of from the metal surface. There is no time lag, very small time lag, there is no time lag between falling of photon and ejection of electrons from metal surface. Okay, from the metal surface means photoelectric effect is instantaneous means what does it mean? It is very fast. So these are the verifications of the, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछेगा प्रूव द state the laws of photoelectric emission on the basis of photoelectric effect. Don't give the previous laws. When the question came, state the laws of photoelectric emission, then what you have to do? You have to do the previous laws. When the question came, prove the laws, state the laws of photoelectric emission on the basis of photoelectric equation, then do use this is the expression. These are the laws. Okay, you have to verify these. You have to verify these by writing this question. You will get the marks then. Okay, so this is the Einstein photoelectric equation and the verification of the laws of photoelectric emission. हमारे पास ये है, अगर हमने इस इक्वेशन से हम लोग जो हैं वो प्लैंक्स कांस्टेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड व्हिच वन योर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, किसी मेटल का वर्क फंक्शन और जो है प्लैंक्स कांस्टेंट हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हाफ एम बी मैक्सिमम इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h into nu minus nu naught. This is your equation, h into nu minus nu naught. This is our equation. But we know half m b maximum square is equal to ev naught. What is ev naught? V naught is called stopping potential. What is called stopping potential? This is called stopping potential that we have done already. What is the stopping potential? The energy required to stop the electron. The negative potential required to stop the electron is called stopping potential. Negative potential जो हम अप्लाई करेंगे कितना वो से हम stopping potential.
Stopping cutter potential बोलेंगे. Cutter potential, that is, this we have already done in the previous topic. We have done this one. So substitute here. What we got? E V naught is equal to h into nu minus h into nu naught. Is the question. Now what we got? If we write it as V naught is equal to h by e into nu minus h by e into nu naught. This is our equation. H by e into nu naught. लेकिन what is h nu naught called? This is equal to h by e into nu and minus of h by e is equal to phi naught. Phi naught, h nu naught is called phi naught upon e. If you see, this equation is just the equation of a straight line having intercept c. But the equation y is equal to mx plus c. What is m called? M is called tan theta or that is equal to slope of the graph. Slope of the graph. ये हमारी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की. सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट. सी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट. इट मे बी प्लस माइनस. Here is minus, it is intercept is minus. Y is equal to m is called slope of the graph or slope of the graph is also represented by tan theta that I have explained in +1 class. कि tan theta क्या होती है slope of the graph, क्योंकि tan theta की जो वैल्यू होती है जैसे slope बढ़ती जाती है तो 90 के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है. थीटा की वैल्यू भी tan theta की वैल्यू पहले 0 होगी फिर मैक्सिमम जब थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम हो जाएगी. इसलिए स्लोप मैक्सिमम. tan theta से हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं. sin थीटा से नहीं करते, cos से नहीं करते, हम tan theta से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं. tan theta ऐसा फंक्शन है जो स्लोप को करता है रिप्रेजेंट. तो अगर हम इस चीज का ग्राफ बनाएं, it is very easy to make the graph. See, we can make the graph between which one? Your stopping potential and frequency. Stopping potential and the frequency, we can make the graph. So toward this side we can take the stopping potential and toward this side we can take the frequency. We can take the frequency. This is stopping potential. If you see, as you know, if you see the graph, it is a straight line. What will happen here? Here we intersect minus c. So it is a straight line, but intercept is minus c. This is the graph. What is frequency called? This is called threshold frequency. This frequency is called threshold frequency, nu naught. Okay. What about this? If you see, we will make here the this right angle triangle. You will find here this value is delta v naught, and what this value equal to? This is equal to delta nu. What is called? Delta nu. We can find this value and this value from the graph. Let's see what is the slope of the graph. That is m is equal to, where is that equation gone? Half m. That is v naught is equal to h by e into nu, okay, minus h by e into nu naught. See the case, h by nu is phi naught upon e. Here is not nu naught. So what we can say, what about the slope? That is slope is given by tangent theta. Tangent theta यहाँ से किसका? So this is equal to theta, then tangent theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular upon base, that is delta v naught divided by delta nu. What is m equal to, or what is c here? What is m here? H by e. But we can say h by e is equal to delta v naught upon delta nu. Or what we can say, we can find h is equal to e into delta v naught upon delta nu. इस ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं. आपको डेल्टा वी नॉट पता है, आपको डेल्टा न्यू पता है, आप यहां सब्स्टिट्यूट करिए. ई आपको पता है, ई यू नो दैट इज 1.62 10 पर -19 कूलम. बट वी गॉट h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.6 अब क्या रह गया? इस ग्राफ को आप देखेंगे, ये इसका इंटरसेप्ट. व्हाट इज दिस? व्हाट इज OC? व्हाट इज OC? OC is the intercept. What is OC equal to? That is equal to, where is that equation gone? See, I have written here, this is your phi naught upon E. This is the intercept. See, this is the intercept. Means what is OC equal to? That is minus phi naught upon E. Yeah, phi naught upon E. That is my phi naught upon E. OC का मैग्नीट्यूड लेंगे, that is phi naught. What is phi naught equal to E into OC? हाँ, ये माइनस है ना, ये माइनस था, हमने इसको क्या कर दिया, फिर मॉडल से लगा प्लस कर दिया. E को किससे गुणा कर देंगे? O से कर देंगे. हम लोग phi naught भी उसका निकाल सकते हैं. तो हम क्या क्या निकालते हैं? वर्क फंक्शन निकालते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट भी इस ग्राफ से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, दैट इज द आवर आर्टिकल इज दैट. Next we have to discuss which one your, now we have particle nature of light, the photon, energy quantum of radiation, energy quantum of radiations and particle nature of light, the photon. Okay, energy quantum radiations क्या है? energy quantum radiation की बात करें, जो एनर्जी है एक्चुअल में जो लाइट है, इट कंसिस्ट, लाइट जो है इट हैज अ डुअल नेचर. लाइट का कैसा नेचर है? लाइट है डुअल नेचर. डुअल नेचर है मींस
कुछ phenomenon just like your polarization, diffraction, your interference, your different phenomenon you have studied in the optics, that is explained by which one, your wave nature of the light, and few phenomena just like Compton effect, photoelectric effect, X-ray spectra, etc., that is explained by particle nature of light. So yesterday I have given you कि there is a contribution in the scientist, there is a contradiction in the scientist कि what is the nature of light. Different scientists have given their tries to give them what no scientist can prove कि all the phenomena by either by particle nature, either by wave nature. So ultimately the it is concluded by the de Broglie that light have dual nature. It consists of particle. It will behave like a particle as well as light. Means radiation will behave like a particles as well as like the wave. Now the light have the dual nature. Then if you see जो लाइट ऊपर से आ रही है उन वहां से हमें पता लगा कि लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट का नेचर कंटिन्यूअस नहीं होता, डिस्क्रीट नेचर का। लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। जैसे ऊपर से लाइट आएगी तो उसके बीच में लाइट आ रही है तो लाइट के बीच में नीचे को क्या आ रहे हैं? फोटोन। एक फोटोन आ रहा है, दूसरा फोटोन आ रहा है, तीसरा फोटोन आ रहा है। तो प्लैंक ने इस चीज को, मैक्स प्लैंक उसने यहां से दिया हमें, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू h into nu होती है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज गिवन बाय h into nu, where nu is the frequency, mean energy is directly proportional to nu. What will happen? We suppose we have a nucleus and this is the first orbit, this is the second orbit, the third orbit. As you know, electrons are here, here, here. Okay. What will happen if the electron will jump from higher energy state to the lower energy state? Then the energy will be released, as you know. Or that is given by, that is energy given by h nu, or that is equal to E final state minus E initial state. Means h nu जो एनर्जी जो होगी जो रिलीज होगी, दैट इज डिपेंड अपॉन द फाइनल स्टेट की एनर्जी कितनी और इसकी इनिशियल, दैट इज द फोटोन विल रिलीज, फोटोन कम्स आउटसाइड व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर. If the electron will go from lower energy state to higher energy state, then what will happen? Energy will be absorbed. एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी. इस केस में क्या होगी? रिलीज होगी. जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी. यहाँ पे एब्जॉर्ब कितनी होगी? h nu. यहाँ पे रिलीज कितनी होगी? h nu. तो लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटोन होते हैं. और फोटोन कैसे आते हैं? जब इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट को जंप करता है. और एब्जॉर्ब कब होता है फोटोन? जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है. यू नो दीज आर कॉल्ड द एनर्जी स्टेट्स. नाउ हियर E is equal to h nu, that is energy possessed by the photon. This already I have discussed you. If I have a photon, if we have a photon having frequencies more, the light have the frequencies more, then the photon is more energy. That photon is more energy. अब फोटोन आ रहे हैं तो वहां से एक हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बन गई कि एनर्जी कैन नाइदर बी गेटेड नॉट स्ट्रे. तो हम जानते हैं दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लेकिन यहाँ पे एनर्जी can exist in packets, of that packet is called quanta. What is the quanta of energy? That is called h into nu. Energy, minimum possible energy in the nature is h nu, और एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं n into h into nu. फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितनी एनर्जी होगी? दैट इज h nu, जो फर्स्ट ऑर्बिट. सेकंड के पास कितनी होगी? 2h nu, then 3h nu, then means n may be equal to 1 2 3 so on. एनर्जी जो है वो पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है, not in continuous amount, or that is called the quantization of energy. You know charge is quantized, but the minimum possible charge in nature, that is E. There is a 2E, 3 plus minus 3 plus minus 4E, 5E. Is this E by 4 charge is possible? This is not possible. Why it is not possible? Because this is in fraction. तो fraction में charge कभी exist नहीं करता. Charge always exist in which one, your quanta in packets, or one packet is equal to E, 2E, 3E, 4E. इस तरह से एनर्जी कैसे एग्जिस्ट करेगी? h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu. Can this energy be exist in the nature? No, this energy can't be exist in the nature. Why? Because this violates the concept of quantization of energy. Means energy is also quantized. Energy quantized है. What is the quanta? Means n is equal to 1 2 3 so on. E is equal to h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu. इसलिए photons आ रहे हैं, ऊपर से photon आ रहे हैं, लाइट के अंदर photon. E is equal to n into h into nu. This is the energy of the photon. Okay. Now next is particle nature of light, the photon. अब photon क्या होता है? Photon is the energetic particle consists inside the light having energy equal to h nu. But we can write the photon. We can write the photon. A photon is a packet of energy. Photon is a packet of energy. Photon is the packet of energy, or quantum of energy, or quantum of energy ejected at the speed of light. Speed of light से क्या होता है?
इजेक्ट होता है बाय एन एमीटर के द्वारा। मींस फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्सेप्ट फोटोन। फोटोन कैन मूव विद दिस वेलोसिटी। तो फोटोन की कितनी वेलोसिटी होती है, दिस इज फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू h इनटू न्यू। तो दिस इज द केस। नाउ व्हाट वी कैन से, देयर इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। There is some properties of photon. I will write these properties. We have some properties of photons that might be asked in the examination. What do you mean by photon? Write its property. The simple question that might be asked in 3 marks. ये यूनिट सिर्फ 3 नंबर का आएगा। तो आपने कोई भी क्वेश्चन आपको आता है 3 मार्क्स में, तो what we can say properties of photons क्या है? A photon travel with the speed of light. See, what is the velocity of light of the photon? That is equal to c. सिंपल सा क्वेश्चन है। जो EM waves की प्रॉपर्टी लगभग फोटोन्स की प्रॉपर्टी होगी। Photons travel with speed of light. A photon has zero rest mass. Means rest mass of the, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा रेस्ट मास कितना है, सपोज 70 किलोग्राम पर जो भी है पर फोर्स है। तो ये न्यूटन में मेरा जो मास है 70 किलोग्राम है। अगर मान लीजिए मैं मूव करता हूं तो क्या मेरा मास कम और ज्यादा हो जाएगा? हाँ जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि मास जो होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। वेयर m नॉट इज कॉल्ड द रेस्ट मास और m इज कॉल्ड द काइनेटिक मास। m नॉट क्या कहते हैं, रेस्ट मास, और m कहते हैं काइनेटिक मास। अगर मान लीजिए b इज इक्वल टू c हो जाए तो m किसके बराबर हो जाएगा, m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दैट इज का रूट ऑफ m नॉट अपॉन 0, और व्हाट इज m नॉट बिकम इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका। सी what is the see, in this case it is equal to infinity. Basically it is equal to infinity means mass is infinite, means mass will vary with the velocity. If we provide the velocity to this object and start moving with very high velocity, then its mass start increasing. Suppose ये 4 ग्राम का है, लेकिन जैसे हमने इसको velocity प्रोवाइड की, बस इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मास is not a constant quantity, mass changes with the velocity. Mass changes with the velocity. तो बड़ी द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, दैट इज 0। अगर फोटोन रेस्ट में होगा तो उसका मास कितना होगा, 0। लेकिन अगर फोटोन का काइनेटिक मास किसके बराबर होगा, मींस रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू 0। काइनेटिक मास विल इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी। मास ऑफ द फोटोन इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी विल इंक्रीज, द मास विल, एनी बॉडी start moving, its mass start increasing. But our velocity is very small, that's why we can't see this effect. This effect is very negligible in for us. Okay, so this is the case. Now kinetic mass of photon is 0. See, the kinetic mass of photon is m is, see, we know E is equal to mc square. Then what is this, the relation, Einstein relation है, m is equal to E by c square हो जाएगा, that is h nu by c square। लेकिन nu is equal to c by lambda, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे h into nu upon c square by lambda। You will got here nu sorry, h into nu means c by lambda into c square, you will got c cancel, h upon c lambda, this relation will comes for you। Okay, h into यहां से आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, यू विल गॉट h अपॉन c लैम्डा आ जाएगा, h अपॉन c लैम्डा। ओके, h अपॉन c लैम्डा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन as p is equal to e upon c। यू नो वन थिंग, बट द मोमेंटम is equal to mass into velocity। लेकिन यहां पे आपके पास मास क्या है, मास into velocity, दैट इज द मोमेंटम is equal to mass into velocity होता है आपके पास। तो E किसके बराबर होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो व्हाट इज mc इक्वल टू, mc मीन मोमेंटम इज इक्वल टू E by c आ गया। ये देखिए यहाँ पे E by c आ गया। अब E किसके बराबर होता है, h nu by c आ गया, और nu किसके बराबर होता है, h into c by lambda होता है। तो c से c कट गया, यू विल गॉट h by lambda आ गया। ये भी आपका प्रूव हो गया। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन दिस वन, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ इज गिवन E इज इक्वल टू h nu इज इक्वल टू c by lambda। हमने यहाँ पे h की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू लैम्डा रख दिया, 1242 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा। तो दिस फोटोन ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। फोटोन्स आर नॉट डिवेटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन्स आर नॉट डिवेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, photons are electrically neutral, because they have no charge, so they are electrically neutral. Photons may also show diffraction under gravitations. Photons also show diffraction under gravitation। अब देखिए फोटोन का जो वेवलेंथ है, जो डिफरेंट मीडियम में चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट मीडियम में चेंज होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। आपको 4-5 आएंगी, रिमेंबर दिस एंड राइट दिस। So this is the dual nature of matter radiation. Now one article will remain that will be discussed tomorrow. So this is your, which one? This is my channel, SK Classes for Physics. Please subscribe my channel. I will, if you have any doubt, you can call me on this number. Thanks. Have a nice day.